Hello everyone. MBBS intern, a bunch of newly recruited doctors who think that now they know everything. They have studied all the 19 subjects, will go in all the departments, learn the clinical exposure and make themselves a better doctor. But on ground reality, there's obviously a lot of paperwork. There are things which you think कि ये intern का काम है क्या? But at the end, if you know, it is a very satisfying experience to now finally go and interact with patients one-to-one as a doctor. So today I'll be telling you how my internship is going on and what's inside the bag of an MBBS intern in India. Myself, Dr. Akshat Juneja. I'm an intern at NSCB Government Medical College and Hospital, Jabalpur. If you have not yet subscribed the channel, consider subscribing for more such videos. Let's begin with the most important part of a life of an intern, that is logbook, right? So logbook is something, as you all must be knowing, that interns need to take sign of the postgraduates as well as the department HODs for ensuring that they have attended the entire posting. So logbook is by far the most important. Now let's begin with the planning activities. So basically right now I have 2 diaries with me which I use in my internship. What are these for? So basically this diary, the bigger diary, is my task diary. Like in internship there are very uncertainties. आपको नहीं पता अभी आपकी कौन सी पोस्टिंग है, आगे क्या होगा, कब क्या काम करना पड़ेगा. So in that scenario what I do is I always plan 3 hours ahead. अगर अभी मैं सुबह 9 बज रही है तो मैं 12 बजे तक को कुछ प्लान कर सकता हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है या क्या चीज़ें करना है. वो मुझे पता है 3 घंटे में क्या होगा. उसके बाद आई एम नॉट श्योर व्हाट विल रियली हैपन. सो दिस इज़ द टास्क वाली लॉगबुक कि जिसमें मैं सारी टास्क नोट करता हूँ और उसके बाद जैसे जैसे काम होता है तो उसको इंश्योर करता हूँ कि वो टिक हो जाए. देन ये जो छोटी डायरी है, दिस इज बेसिकली समथिंग विच आई लर्न. सो सपोज इफ आई एम इन करंटली इन गायनेक ओपीडी, सो इफ आई डोंट नो एनी पर्टिकुलर मेडिसिन जो कंसल्टेंट ने लिख के दी है, जो पीजी ने लिख के दी है, या एनी पर्टिकुलर फाइंडिंग ऑफ एनी डिसीज, तो मैं उसको छोटे से जल्दी से अपनी डायरी में लिख लेता हूँ ताकि मैं घर पे आके वो ड्रग को, उसके डोसेज को पढ़ पाऊँ, ताकि पेशेंट को भी नहीं लगे कि डॉक्टर साहब को कुछ बनता नहीं है. बट एट द सेम टाइम आई कीप लर्निंग ऑल द मेडिसिन एंड द डायग्नोस्टिक पॉइंट्स. So these are something which everyone should have. Now if we go more about the planning scenario, so we have things like notes, obviously, like we need to carry with us. So I am currently using one blank notebook, right? This is basically used by me जब भी मेरा कोई टॉपिक है जो कि कंप्लीट हो जाता है तो उसके मैं माइंड मैप्स बना के रख लेता हूँ और मैं उसको रिव्यू करता हूँ अगली बार जब सब्जेक्ट को, तो मैं सिर्फ माइंड मैप्स पढ़ता हूँ, राइट. और ये माइंड मैप्स इंस्पायर्ड होते हैं प्रीवियस ईयर टॉपिक से कि इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्या टॉपिक पूछा गया है, राइट. सो नाउ करेंटली आई एम डूइंग 2 subjects. One is radiology and one is medicine, right? So basically what I do is I do one short subject and one long subject. तो जब भी मेरा लॉन्ग सब्जेक्ट चल रहा होता है, मेरे को जब भी बोरियत आ जाती है तो मैं शॉर्ट सब्जेक्ट पे स्विच कर लेता हूँ. सो नाउ सब्जेक्ट लाइक रेडियोलॉजी आई प्रेफर प्रिंटेड नोट्स. करंटली आई एम वॉचिंग इट फ्रॉम डॉक्टर ज़ैनब वोरा मैम ऑन प्रेप लैडर. सो जो प्रिंटेड नोट्स है उसमें क्या फ़ायदा होगा इन सब्जेक्ट्स लाइक रेडियोलॉजी पर्टिकुलरली इज इमेज बेस्ड, राइट. सो इमेजेस आपको सारी वहीं पे अच्छी क्वालिटी की मिल जाएंगी and whenever you will study from the notes, so directly you can use those images. In medicine, since I have watched in 3rd year Dr. Deepak Marwa sir's videos on prep ladder, so I have handmade notes of almost all the units except emergency medicine, which I prefer handmade notes, printed notes. So in this particular section, right, like now I am doing CVS, so right, I prefer whenever, like suppose my OPD timings are 9 to 4. So after going done with my OPD, I take a break of 1 hour, and then after that what I do is I start studying medicine as and when I get time, and whenever I feel बस बहुत हो गया, so I do radiology. So now this was the scenario after OPD. Now what during the OPD? So now in OPD, as well as in any posting, you have some time which is आप कुछ काम कर रहे हो बट आप फ्री हो. लाइक जैसे कि आप ब्लड प्रोसेस कराने गए हो किसी पेशेंट का, आप रिपोर्ट्स का वेट कर रहे हो, तो उस दौरान मैं क्या करता हूँ, आई कैरी माई आईपैड विथ मी. सो वॉट आई डू इज कि बेसिकली आई ओपन any whatever resources I have for study. So now currently what I am studying is prep ladder का treasure. So now what I do is basically in the time of break, यहाँ पे बहुत सारे tables दिए होते हैं, right? These are very short tables which are of height. So suppose I am obviously free right now, I am waiting for the report, so I'll quickly go over all the tables of the subject that I am currently reading. So अभी I am reading radiology. So what I do is I'll just go through कि BI-RADS का classification क्या है. तो बिकॉज इसमें वो सारी चीज़ें रहती हैं जो हम यूजुअली भूल जाते हैं, तो अगर मैं उसको बार बार देखूंगा तो मुझे याद रहेगा. ऑन द सिमिलर पॉइंट व्हाट आई डू इज, जो भी मेरा क्यू बैंक, जैसे सपोज करो मैंने रेडियोलॉजी का 1 यूनिट पढ़ लिया है,
तो उसका क्यूबैंक भी मैं वहीं सॉल्व कर लेता हूँ. उसको मैं रिव्यू बाद में लाइब्रेरी में करूँगा, बट मैं उसको वहीं पे अटेम्प्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे एक थोड़ा सा वो माइंडसेट मिलता रहे. आई कांट रीड माई नोट्स ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज ऑब्वियसली नोट्स रीडिंग रिक्वायर लॉट मोर एफर्ट्स. So this is what I do in my free time in the internship, which also makes it more hectic although. So now let's proceed to the next essentials. So the next essentials is scrub, right? So scrub is something which every intern sorts of dream ki bhai ab scrub पहन सकते हैं officially being a doctor. So currently I am using Kenyamed EcoFlex scrubs. This is again not any promotion. This is what I honestly use. These are available on Amazon as well as on their website, so you can check that out. So now the next thing is basically essentials like masks, obviously because COVID is going on. Then there are set of gloves which although they are in hospital supply, but sometimes it better to carry your own because if anything goes out of stock then you can use it. Then what I use are many sets of highlighters which I basically whenever I read notes, so I use them. Then there's this hammer. There are also measuring tape, torch and essential clinical devices which are mostly अभी काम आएगा जब गायनिक के वार्ड में ड्यूटी लगेगी, मेडिसिन में लगेगी तब. Then there's sanitizer again for the same purpose. Now the most important thing that every intern should have are as many number of pens possible, because क्या होता है कोई भी आता है any doctor, if they don't have pen right with them they will ask the intern pen दे, and every day I lose my 2 to 3 pens every day. So this is what you should always have by your side. Then obviously there's stethoscope which you should always have with you. Now again I would prefer कि अभी लिटमैन नहीं भी होगा तो it would be very fine because यहाँ तो exchange हो जाता है, यहाँ आप कई बार छोड़ देते हो, तो it's better. Like my personally what I use is I guess this is what I got from my coaching institute in my NEET UG times when I got selected. So this does not matter as much now. So now the next again very important thing is as many as biscuits, as many as whatever you can use, mixture, sew, whatever you want you can have it with you, because intern में again कई बार ऐसे जब आपकी ड्यूटीज थोड़ी longer hours की होती है तो बीच बीच में आपको लगता है कि कुछ खाने को मिल जाए, तो it is very important to have that with you. Then there are obviously headphones because whenever if I need to watch any amount of videos, so I can watch it via the headphones. There's also Bluetooth speaker. कभी कुछ अच्छा टाइम हो, कभी आप कहीं एकदम से घूमने निकल जाओ, PSM की पोस्टिंग में जाते टाइम आपके पास टाइम है, PHC CHC जाते टाइम, so you can obviously enjoy some good music. Then there are sticky notes which I guess is what everyone uses for their studies. So I use 3 kind of sticky notes. One is the longer ones जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड स्टफ लिखना होता है. देन देर आर स्मॉलर वर्जन जिसमें आई जस्ट राइट द की पॉइंट्स कि जो मैंने पूरा एक यूनिट पढ़ लिया है तो उसकी बस हेडिंग ताकि एक माइंड मैप अपने आप में आपके बना रहे कि आपको उस चैप्टर को कैसे प्रोसीड करना है. देन देयर आर दी स्मॉल वंस जिसमें आई बेसिकली व्हाट आई डू इज कि कलर कोडिंग, तो जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, लाइक विच आई टेंड टू फॉरगेट, आई कीप इट विद द ग्रीन वंस. Then yellow is something which is very important, and then pink are ones which are previous year asked. So kabhi kabar this is something which could be used in very long subjects or in your first aid. If you are reading first aid then you can do this particular thing because उसमें क्या होगा कि आप पूरी बुक तो ऑब्वियसली रिव्यू नहीं कर पाओगे, बट आपको जब भी चाहिए होगा तो आप रिव्यू कर सकते हो. सो नाउ मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैकबुक क्यों रख रखा है, राइट? सो बेसिकली दिस इज देयर इन माई बैग बट ओनली ऑन संडेज, राइट? सो संडेज यूजुअली इफ यू हैव OPD then it's very fine that you get a holiday. So on Sunday what I do is basically I go to library, I keep my MacBook with myself and I attempt grand test or any subject wise test for that matter. So right, like now I attempted Prepletter grand test like I guess previous week. So I attempt that particular test as and when needed. And जैसे Sunday को what I do is Sunday is my break day. So 9 to 12 or any 10 to 1 I attempt the test. Then after that I analysis it for 1 to 2 hours. I do not do its complete analysis. जो बचा हुआ एनालिसिस होता है वो मैं अपने iPad पे, जैसे मैंने आपको बताया इंटर्नशिप में जब गैप थोड़ा टाइम मिलता है तब करता हूँ. And then the other half goes in leisure activities or maybe shooting this particular video. So this is how the Sunday goes for a life of an intern. So guys, this was my small attempt to make some kind of vlog wala video for all of you. We have always been making educational video, but I think इससे भी आपको कुछ value add हुई हो. And if you really like the video and if you are watching it till now, please consider subscribing. And if you have any particular comments, feel free to comment. You can also get in touch with me on my Instagram handle MedShots, and if you have any query, feel free to drop it there. Thank you guys, stay safe, stay healthy and keep learning.